पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे चली बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। इस बात की जानकारी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दी, जो बातचीत के लिए पाकिस्तान आए थे। रविवार सुबह 6 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच फासला कम करने और समझौता कराने की पूरी कोशिश की। जेडी वेंस ने कहा, The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Yeah, obviously, we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. वहीं पाकिस्तान की तरफ से शांति वार्ता को लेकर उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने जानकारी दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत और संवाद को बढ़ावा देने में भूमिका निभाता रहेगा। उन्होंने कहा, We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. वहीं इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि इस बातचीत में कुछ नए मुद्दे भी शामिल किए गए। उन्होंने कहा, در مورد یک سری از موضوعات ما به تفاهم‌هایی رسیدیم واقعیت، اما در مورد دو سه موضوع مهم خب دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً منجر به توافق نشد این گفتگوها. نکته دیگه‌ای که باید مد نظر داشت پیچیدگی موضوعات و پیچیدگی شرایط بود. بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد، مثل موضوع تنگه هرمز یا منطقه. خب اینها خودش شرایط، ویژگی‌ها و مقتضیات خودش رو داره. बता दें कि ये बातचीत 40 दिनों से जारी क्षेत्रीय तनाव और सैन्य टकराव के बीच बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, लेकिन दोनों पक्ष किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघिर गालिबाफ ने वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त होने पर कहा कि अमेरिका हमारा भरोसा जीतने में नाकाम रहा। अब सबकी नज़र अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर है। क्या अमेरिका और ईरान बातचीत के लिए फिर से एक ही टेबल पर आमने सामने होंगे या फिर दोबारा जंग की शुरुआत होगी?